Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 16th and 17th of Feb. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Students, in this video we will be talking about Panchayati Raj Devolution Index 2024. We will be talking about which state has topped in this index, what is this index all about. Then DOT and CDRI, they have unveiled a roadmap to strengthen the India's telecom resilience, that means to grow the telecom sector. Then Ministry of Ayush, DOSJE, that is Department of Social Justice and Empowerment, they have signed a memorandum of understanding to boost the geriatric healthcare. Right, what is this? We will be discussing about this MOU. Then RPT portal has been launched recently by SEBI. What is this portal, why it has been launched, what are the aspects of it, what are the key points of it, everything will be discussed here in this video. So all these points and many more news are there in this video students, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly to help you prepare better for the competitive exams. Also students, share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. Panchayati Raj Devolution Index 2024 has been released, in which Karnataka has secured the first position and Kerala secured the second position. Tamil Nadu was on the third position. Right, now what does this Panchayati Raj Devolution Index is all about? This index is talking about the finances of the Panchayati Raj. It is talking about the framework of Panchayati Raj, the accountability of Panchayati Raj, right? So these things are looked into the panchayats of various states across India, right? And based on that, this Panchayati Raj Devolution Index has been released, correct? And it is Karnataka that secured the first position in this index, followed by Kerala, then on Tamil Nadu on the third position, correct? Here you can see the Union Minister of State SP Singh Baghel, our Union Minister of Panchayati Raj, Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying, has released this index, correct? And it was developed by whom? It was developed by IIPA, that is your Indian Institute of Public Administration. And here this devolution index is basically a tool that will strengthen the cooperative federalism and local self-governance. Also, this will enable to identify the areas that require improvement in the panchayats, correct? Next is DOT and CDRI. They have unveiled a roadmap to strengthen the India's telecom sector. What is DOT? DOT is your Department of Telecommunication, right? And they have recently partnered with CDRI, that is your Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, right? That means this partnership has been done that will enhance the India's telecom sector, right? See, whenever there is a disaster, right, the telecom is likely to impact in that area, right? So in order to make sure that the towers, the signals in that area, right, they are not impacted because of the disasters. The disasters here include your flood, earthquake, correct? So in such cases, the infrastructure of telecom sector should be intact. For example, see, there is a war going on in Ukraine, right? But we have seen that Russia, they have taken down all the infrastructure of communication in that area. So what they are using is, they are using Starlink,
that is a company of Elon Musk that is providing internet satellite connection to them, right? So what is this? This is other kind of communication infrastructure that has been utilized by Ukraine, because the traditional infrastructure where all your towers are there, they are being taken down by Russia, right? So similarly in India, if there is any disaster, in that case the telecom sector should function properly. In order to prepare for that in advance, in order to prepare a proper framework for the same, this partnership has been done. Correct. So here you can see DOT, they partnered with CDRI and they have unveiled a comprehensive report on disaster risk and resilience assistance framework, right? This marks a significant step towards strengthening India's telecom sector against disasters. Next, this study, it was conducted across 5 states: Assam, Tamil Nadu, Odisha, Uttarakhand and Gujarat. Moving on. Next is Ministry of Ayush and Department of Social Justice and Empowerment. They have signed an MOU that will boost the geriatric healthcare, right? So Ministry of Ayush, that is Ayurveda, Yoga and Neuropathy, Unani, Siddha and Homeopathy. They signed this MOU with Department of Social Justice and Empowerment, right? And why this MOU has been signed? This MOU has been signed basically to implement the Ayush based interventions that will enhance the geriatric healthcare and also address the substance abuse. Also, this is a milestone in India's healthcare journey, where you will be seeing Ayush systems has been blended with the social justice initiatives to foster a more inclusive society. Correct. This geriatric healthcare and substance abuse, they are vital areas that are required attention, or that require attention in our society as of now. And this MOU will help the or also improve the health as well as the well-being of senior citizens. Correct. We will be seeing various cooperative efforts here. Research will be promoted. Also activities and workshops will be done that will be promoting the better health or good health. Next is banking and finance. SEBI has launched RPT portal that will strengthen the corporate governance and transparency. Right now, what is RPT portal? That is your related party transaction. Related party transaction. Right? This is your RPT portal. Correct. It is SEBI that has launched this RPT portal, that is India's first dedicated platform that will monitor and analyze the related party transaction. This will enhance the transparency and governance in the corporate India. Also, this RPT, what is this related party transaction? It is a transaction that is related, or it is between the related parties that involve the transfer of resources, services or any obligation between them, and at whatever price that has been charged. Also, this portal here, RPT portal, it will be a comprehensive platform that will include the shareholding voting patterns from the last 2 years and will also enable the investors and other entities to make a well-informed decision. Right? Apart from this, remember, SEBI has announced the approval of new RPT disclosures by ISF, that is your Industry Standard Forum, and these new standards aim to ensure more transparency and protect the investors. Who is, if we talk about ISF, Industry Standard Forum, who is the chairperson here? KV Kamath. It was established in 2023. Next is RBI has imposed the restrictions on New India Cooperative Bank on supervisory concerns. I repeat, in Feb, RBI, they imposed restrictions on Mumbai, Maharashtra based New India Cooperative Bank Limited for issuing the new loans and suspended deposit withdrawals for supervisory concerns. Correct. Also, these restrictions, they were issued by RBI under the section 35A of the Banking Regulation Act of 1949. Also, these restrictions came into force from 13th of Feb 2025 and will remain into force for a period of 6 months. Also, as per RBI direction, the bank does not have the power or authority to grant or renew any loans or advances and make new investment or accept new deposits without the prior approval from RBI. That means the banks, they cannot grant or renew any loan or also make any investment before taking approval from RBI. Also, RBI has permitted the loan set-offs against deposited under specific terms and conditions. Also, it has also allowed the banks, that is RBI has allowed the banks to incur essential expenses such as employee salaries, rent and electricity bill. Next, one more thing, remember here students, RBI, they have superseded BODs. What is BODs? Board of Directors of New India Cooperative Bank for the next 12 months. Right? Next
Next is NPCI has introduced the new UPI rule on automatic acceptance rejection of charge banks from a charge back from 15th of Feb 2025. What is this about, students? See, NPCI, this is the organization that released the UPI, right? And as per the new UPI rule, the chargebacks will now be automatically accepted or rejected based on the transaction credit confirmation and return requests that are raised by the beneficiary banks in the next settlement cycle. Also, this above new mentioned rule, this will be implemented from 15th of Feb 2025. Right here, remember a chargeback, we saw that this, right, chargebacks, rejection of chargebacks, these chargebacks, there are a process that will reverse a completed UPI transaction due to disputes, fraud or technical error, right? Sometimes you see you make a wrong payment, right? So that payment will be rejected, or that payment, once you have completed the payment also, then also it will be revert back if you are finding a fraud in that thing, right? If you have registered a complaint against that, right? So this is the reversal of UPI transaction. Correct. How this will be beneficial is we are seeing such scams going on, right? So this scam can be reduced, because once you know that is a scam and immediately you inform the authorities, registered regulated authorities for the same, then you can reverse that transaction of the money that you made, and your money will be coming back into your account. And at present, the remitting banks can start chargebacks from T+0 onwards in URCs due to which the beneficiaries are not getting sufficient time for transaction. Correct. So here you can see this new mechanism, and it will be very beneficial to stop the scams and also to save the money of the individuals. And also sometimes there are faulty payments and the payments that you do not want. In that case, that chargebacks will be coming back into your account. If we talk about NPCI, who is the Managing Director and Chief Executive Officer, Dilip SB, headquartered in Mumbai, Maharashtra, established in 2008. Next, RBI has extended the Vakranji's WLA authorization till 2026. See, Mumbai, Maharashtra based, this RBI, they have recently extended the Mumbai, Maharashtra based Vakranji Limited authorization to set up, own and operate the white label ATMs. What are these white label ATMs? White label ATMs are those ATMs that are operated and set up, and the infrastructure is provided by the non-bank entities, right? So this is your Vakranji's WLA authorization. This is the authorization given to the Vakranji's for WLA. What is WLA? White label ATMs. As of 31st of January, Vakranji operates 6,036 white label ATMs, and 76% of these are in Tier 4 and Tier 6 location that enhance the financial accessibility in the underserved and unserved areas. Next is RBI has removed the regulatory barrier on the Kotak Mahindra Bank, and this was allowing the Kotak Mahindra Bank to resume the onboarding of the new customers digitally and issuing the new credit cards now. Right, these restriction has prevented the bank from adding new customers through online and mobile banking and also issuing the new credit cards, but now these issues has been resolved. Next is RBI has approved Zulia Investments to increase the stake in AU Small Finance Bank. This Zulia Investments, this is a subsidiary of Singapore based Timask Holdings Private Limited, and they have recently increased their stake in the AU Small Finance Bank to 7%, right? If the acquisition is not completed by 12th of February 2026, the approval will lapse. As of now, Zulia Investments, they hold 1.37% stake in AU Small Finance Bank, and this will be increased to 7%. And remember, Zulia increased stake, it could be the largest foreign investor in the bank. Next, IFC invested 860 crore rupees in India's first SLB in road sector issued by the Cube InvIT. What is SLB? SLB is your sustainability linked bond, right? And it has been launched in the road sector. It has been launched by whom? It has been launched by Cube InvIT. What is InvIT? Infrastructure Investment Trust. It is similar to that of REITs. REITs are when you are investing in the residential real estate, right? And in InvITs, similar type of return is given, but you are investing in the infrastructure development that can include your highways, right? That can include your education related universities, schools, hospitals, and many more, right? So IFC, that
that is International Finance Corporation, that is an arm of World Bank only. They have recently invested 860 crore rupees, that is close to $98.35 billion in India's first sustainability linked bond in the road sector, and that is issued by the Cube Invits. Very important. Also here the Cube Invit, they have raised the investment through non-convertible debentures that will be giving a fixed rate of 7.67% annually. Moving on, next is Exim Bank. This will be providing 300 million crore credit, $300 million credit to Vietnam for the procurement of guard boats and patrol vessels. What this will do is, now this will be enhancing the surveillance here, right? This contract will be given to Vietnam. This will be given by Exim Bank, that is Export and Import Bank of India, and they will be providing how much amount? That is $300 million credit will be provided them, right, to Vietnam for buying the high-speed boats and offshore vessels. Next is students, Exim Bank, that is Export and Import Bank of India. They have provided a line of credit to Vietnam so they can procure the guard boats and the patrol vessels. What this will do is, this will enhance the surveillance in the Vietnam, correct? This line of credit is worth $300 million to Vietnam. This will enhance their surveillance, right? So for them, these guard boats and patrol vessels will be procured. Right here, the bank has agreed with the government of Vietnam to commit a line credit of $120 million initially, and then $180 million also for a different project. Here you can see Exim Bank signed this agreement with the government of Socialist Republic of Vietnam for making available to the latter. The government of India has provided a line of 180 crore rupees, $180 million for the procurement of 4 offshore patrol vessels, and other is for $120 million for the speed guard boats. Next is Decentro. They have launched the India's first self-hosted CKYC solution that aligns with the CERSAI's new compliance mandate. I repeat, Bengaluru, Karnataka based Decentro Tech Private Limited, that is a leading fintech infrastructure platform, and they have launched the India's first completely compliant self-hosted central know your customer solution. What is KYC? Whenever you are opening a bank account, right, they ask for your documents, they ask you about Aadhaar card, your PAN number, right? So what these things tell is, they tell about your customer, you are a genuine customer, right? You have a better civil score. This is an example, right? But this tells about that you are a genuine person and all your documents are credential, right? All your credentials are check and thorough and you are not faking those credentials, right? So this is your KYC. Similarly, I repeat, Decentro, they have launched the India's first self-hosted central KYC solution that will comply with the CERSAI's compliance. CERSAI is your Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India Compliance Framework. It was established under the Section 20 of the SARFAESI Act of 2002. Next is MSCI Equity Indexes February 2025. HMIL has been included from this MSCI Equity Index and AGEL has been removed here. HMIL, what is this? This is your Hyundai Motor India Limited. It is Gurugram, Haryana based company here, and it has been added to the MSCI Emerging Market Index because if you remember few time back, Hyundai's IPO was also released, correct? And also here you can see AGEL has been removed from this index. AGEL is your Adani Green Energy Limited. It has been removed here from this index, and these changes will be implemented from 28th of Feb and will take place from March 3rd of 2025. Also with this, the India's weight in the index has increased to 19%, up from 18.8% in the previous review. Next, here remember one more thing. There are 3 companies that I want you to remember. They have been recently added to the MSCI All Country World Index, right? This is your United Airlines. This is of USA. Second is Reddit A, it is of USA, and Natera Incorporation. These 3 has been added to this MSCI ACWI, that is All Country World Index, and these are one of the largest additions here. Next is Sportstar Aces Awards 2025 was released, and PR Srijesh Manu Bakar has bagged the top honors here as the sports person or sportstar of the year in the male and female category respectively. Who is the sportstar of the year male? PR Srijesh. Who is the sportstar female of the year? Manu Bakar. Correct. Here take a note of this.
PR Srijesh, he is related to which sport? He is related to hockey. Manu Bakar related to shooting. Next, here you can see Sports Star of the Year, hockey, PR Srijesh. For female, Manu Bakar. And National Team of the Year is Indian men's and women's chess team. If you remember, students, Kho World Cup was held recently. It was the first edition that was hosted by our India. And who won this Kho World Cup in men's category? It was won by our Indian team. And in the women's category also, our Indian team has won this Kho World Cup, first edition of Kho World Cup that was hosted by our India. Moving on, NTPC Limited, they have conferred with the Forward Faster Sustainability Award for Water Resilience. I repeat, NTPC Limited, right? Take a note of this. NTPC, National Thermal Power Corporation, that is India's Maharatna CPSE, which comes under the Ministry of Power, and they have been conferred with this Forward Faster Sustainability Award, and it is in the water resilience category. That means they are using this NTPC, they are using the water conservatively, they are focusing on the sustainability, right? And NTPC being the largest integrated power utility of India, it is contributing 25% of the India's power generation requirements, and they have installed more than 77 gigawatts of capacity, and almost 30 gigawatts of new installation capacity is under the way. That means it is in construction. Their target is to achieve 60 gigawatt of renewable energy capacity by the year 2032. Next is appointments and resignation, students. Recently, President's rule has been imposed in Manipur after Chief Minister Biren Singh has resigned, right? So, who was the former Chief Minister of Manipur who resigned recently? Biren Singh. Now, what is this President rule? President rule is imposed in a state when there is no stability in the government and that state has been removed from the power. This comes under the Article 356, and under this the state will be ruled by the governor, right? Governor will assume the executive powers here on the behalf of the President of India, right? And under the President's rule, the elected state government is dissolved, correct? And who takes the lead as the executive head of the state? It is the governor, and he will be managing, or this governor will be managing the administration on the behalf of the President of India, who is the President of India, Draupadi Murmu ma'am. Correct? Take a note of this, very important. The article is also important. It comes under the Article 356. What is the capital of Manipur? It is Imphal. Next is acquisitions and mergers. ONGPL, that is ONGC NTPC Green Energy Limited, and this is a 50-50 joint venture between ONGC and National Thermal Power Corporation. They have made their first investment by acquiring 100% stake in Bengaluru, Karnataka based Ayana Renewable Power Private Limited for 19,500 crore rupees, that is $2.3 billion. This was a share purchase agreement that was signed at the India Energy Week that was held in New Delhi. Moving on. Next is related to sports. Asian Winter Games 2025 was held recently, and China has dominated and India ends the medal list here. What is this saying is that, first thing first, this was the 9th edition of the Asian Winter Games, right? What is the location? Where was this held? This was held in China. This event, 9th edition, it was held from 17th to 14th of February, and it was organized by the Olympic Council of Asia, supported by International Skating Union, and here athletes from 34 countries were taking part. In this medal tally, as it is saying that China has dominated, that means China has won or secured the top position in the medal tally with 32 gold medals, 27 silver and 26 bronze medals. There were total of 85 medals were won by China here, right? Next, on second position, Republic of Korea. Next, here you can see the further list of it. Moving on, renowned classical singer Pandit Prabhakar Karekar has recently passed away in Mumbai, Maharashtra at the age of 80. He was known for his soulful singing, especially the devotional songs such as your Bolava Vitthal Pahava and etc. Also, besides his remarkable performance, he was a dedicated teacher, a great artist with All India Radio and Doordarshan, and he gained a nationwide audience also, and he has recently passed away. Next is important days. International Childhood Cancer Day observed on 15th of February, and you can see here ribbon, yellow ribbon is the symbol for this. This day observed on 15th of February. There is a theme
for this that I want you all to remember. Theme being inspiring action. Inspiring action. This is the theme here. And the 3-year campaign of this is from 2024 till 2026. First time this was observed in 2002. Next is World Pangolin Day, observed on 15th of February, and you can see this is a pangolin, this is an animal. This day is observed to basically create awareness about the conservation and protection of this unique mammal, that is pangolin. And this day falls on 14th of February, falls on 15th of February, marking the observance of the 14th edition of the World Pangolin Day. First time this day was observed in 2012. Next students, let's move to some revision part, then we will be proceeding with the homework section. Next is, for which album Indian American entrepreneur and vocalist Chandrika Krishnamurthy Tandon earned her first Grammy Award under the Best New Age Ambient or Chant Album category at the 67th Grammy Awards in Feb 2025. This was for Triveni. Next is the latest version of the finite element analysis of structure, that is FEAST software, that was launched by which organization? By the 8th National Finite Element Developers Meeting. This was during this 8th edition of the National Finite Elements Developers Meeting that was held at IIT Hyderabad in Telangana. So question asked is, the latest version of the FEAST software was launched by which organization? It was launched by ISRO. Where it was launched? It was launched at the 8th National Finite Element Developers Meet at IIT Hyderabad. Next is, find out the Indian player who recently announced his retirement from all forms of cricket, making the final appearance at Ranji Trophy for West Bengal against Punjab. So who is that player? Vridhaman Shah, right? And he has announced retirement. Next is, which mountain in New Zealand revered as an ancestor by Maori recently granted legal personhood? So it is which mountain in New Zealand? It is Taranaki Monga. Taranaki, not Taranki, Taranaki Monga. This mountain is in New Zealand and it is revered as an ancestor by Maori. Next is, who was recently appointed as the Chief Executive Officer of Sony Group Corporation with effect from 1st of April 2025. So Hiroki Totoki was appointed as the Chief Executive Officer of Sony Group Corporation starting from 1st of April 2025. Next, which of the following organization collaborated with the Carbon Markets Association of India to strengthen the carbon markets and support decarbonization in India? It is Indian Institute of Corporate Affairs. It is Indian Institute of Corporate Affairs, that is based in Gurugram, Haryana. They have signed a memorandum of understanding with New Delhi based Carbon Markets Association of India. This was during the IICA CMAI Masterclass that was on the global and Indian carbon markets. This was a part of the Indian Climate Week that was held from 3rd to 7th of Feb, during which this was signed. Next is, under which ministry a nationwide campaign Watershed Yatra was launched to create awareness about the watershed development activities? It is under which ministry? It is under the Ministry of Rural Development. Correct. This campaign will consist of one movements for around 60 to 90 days across 805 projects that will be covering more than 3,500 villages in 26 states and 2 union territories. And for this initiative, 70 crore rupees has been assigned. Next, identify the country that recently became the first Latin American nation to withdraw from China Belt and Road Initiative. It is Panama, right? This road is also known as the Silk Route, ancient Silk Route, right? And Panama has exited this. Also, it is India who denied or who rejected this initiative. Then Brazil rejected this, right? They both are BRICS nations also. Next, SEBI granted the registered investment advisor license to Dash, marking it the first Finfluencer-led company to receive the license. So it is the 1% club, right? So SEBI has recently granted the registered investment advisor license to 1% club. 1% club is owned by Sharan Hegde, right? And he's the first, this is the first Finfluencer-led company. We know Sharan Hegde is a very famous Finfluencer, that is finance influencer. Next is,
Beacon launched India Bill Pay, that is a service that allows the non-resident Indians in Dash to pay bills directly in India through the Beacon Money application. So, Beacon India, they launched this India Bill Pay service that allows the NRIs in which country to pay bills directly through the Beacon Pay application. It is in Canada. Correct. And with this launch, Beacon, this is a fintech company based in Toronto, Canada. It became the first North American company to integrate with Bharat Connect. Next, RBI revealed that its digital payment index increased to Dash, reflecting an 11.11% year-on-year growth as of September 2026. So RBI, they revealed that their digital payment index increased to 465.33, reflecting an increase of 11.11% as of September 2024. Next is RBI, they have approved the Transaction Solutions International to acquire 100% stake of Tata Communications Payment System Limited. This TSI, that is Tata Communications Payment Solutions Limited. Sorry, this TSI is your Transaction Solutions International. This is an Indian subsidiary of which company? It is an Indian subsidiary of fintech company, right? And RBI has allowed this TSI to acquire 100% stake in Tata Communications Payment Solutions Limited. Next, name the rocket that was launched by Russia from Plistek Cosmodrome to deploy military satellites into orbit. So, which is that rocket by Russia? It is Soyuz 2.1V rocket that was used by Russia to deploy this Plistek Cosmodrome satellite to deploy military satellites into orbit. Next, in Feb, Spin Launch, they have developed an innovative method of Dash to launch satellites into low Earth orbit without traditional rocket fuel. See, what they are doing is, say for example, they are using the centrifugal force, right? They will be rotating the satellite at a high speed, and once they have achieved the required velocity, then from a certain point they will be exiting this, and this with the momentum, that satellite will be going into the space directly and reaching at a certain point, then the thrusters will be used to further take it into the desired orbit. So this is the spin launch concept, and this is an innovative method of launching the electric powered kinetic launch mechanism, right? They will be using this electric powered kinetic launch mechanism to launch orbit or to launch satellites into the low Earth orbit. Launched by which organization? This was developed by Spin Launch. Next, Simona Halep, a two-time Grand Slam champion and former world number 1, has announced her retirement from professional tennis. Which country does she represent? So Simona Halep, she is from Romania, very famous and a professional tennis player, and she's a two-time Grand Slam champion, and she has announced retirement. In 2017, she was the world's number 1 tennis player. Next, students, is our homework section. First, tell me which port welcomes the first ever LNG powered vessel. Name that port. Second, tell me recently which state has approved a 25% raise in the death cum gratuity limit. Third question, where is the world's largest dam being built? Name the river also. Fourth question, recently who has been appointed as the new Director General of CRPF and who he will be replacing? So these are your 4 homework questions, students. Let's move to the Hindi segment of this video now. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 16-17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024 की, जहां पर कर्नाटका ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी, सेकंड पोजीशन केरला की रही, थर्ड पोजीशन रही तमिलनाडु की। देन हम बात करेंगे डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सीडीआरआई, इन्होंने यहाँ पे रोड मैप डिस्कस किया कि हम कैसे टेलीकॉम सेक्टर को बचा सकते हैं फ्रॉम वेरियस डिजास्टर्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी एक एमओयू साइन किया टू बूस्ट द जेरियाट्रिक हेल्थ केयर। देन एक आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इन सभी चीज़ों को एंड मेनी मोर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा स्टूडेंट्स। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज, ये सारे आपके लिए रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके।
एंड स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो हमें एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए सर स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से. हम बात कर रहे हैं पंचायती राज डेवोल्यूशन इंडेक्स की. ये बेसिकली डेवोल्यूशन इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स बताता है कि पंचायती राज को फंक्शन करने के लिए क्या फ्रेमवर्क चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे बोलें कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं पंचायती राज को रन करने के लिए, उनकी फाइनेंसिंग, फंडिंग कितनी लगती है, कितनी फंड्स चाहिए उनको, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, कैसे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने एरिया में, कैसे अपने एरिया का ध्यान रख रहे हैं, क्या वो गोल्स को फॉलो कर रहे हैं जो उनके लिए डिज़ायर सेटअप किए जाते हैं. इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से जो पंचायत हैं उनको असेस करके यहाँ पे डेवोल्यूशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया, जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया है. इनकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती है. सेकंड पोजीशन पे आ जाती है केरला स्टेट. थर्ड पोजीशन पे आ जाती है तमिलनाडु इन द पंचायती राज डेवोल्यूशन इंडेक्स. ये डाटा रिलीज किया गया एसपी सिंह बाघेल जी के द्वारा, मार्क करके चलेंगे. एंड इसको कंपाइल किया गया है आईआईपीए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा. ये बेसिकली एक टूल की तरह काम करेगा कि जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है राइट उनको इम्प्रूव किया जा सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सके एंड हम स्ट्रेंथन कर सकें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस को. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सीडीआरआई. इनके द्वारा भी एक रोड मैप निकाला गया कि हम कैसे इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रेंथन करेंगे. जैसे मान लो कल को कोई डिजास्टर आ जाता है, जैसे फ्लड आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, उस टाइम पे जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाता है. कहीं पे टावर था वो गिर गया जिससे कनेक्शन टूट गया एंड इंटरनेट बंद हो गया, सर्विस आनी बंद हो गई उस एरिया में राइट. बहुत तेज़ बारिश हो गई, वहाँ के ट्रांसमीटर जल गए. तो ऐसे केस में कि हमें क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए ऐसे टाइम पर, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया. एंड क्या मॉडस ऑपेंडी हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी का, कितनी इंटेंसिटी का अर्थ डिजास्टर है, उन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने का काम किया जाएगा. तो यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, इन्होंने पार्टनर किया सीडीआरआई के साथ, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर राइट, ताकि एक डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलिएशन असेसमेंट फ्रेमवर्क को रिलीज किया जा सके. इसके ऊपर एक रिपोर्ट. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे जो स्टडी है 5 इंडियन स्टेट में कंडक्ट करी गई, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड झारखंड, जिनका फोकस रहेगा डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस पर इन द टेलीकॉम सेक्टर. मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने एक एमओयू साइन किया ताकि जेरिएट्रिक हेल्थ केयर के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके. बेसिकली सिंपल टर्म्स में समझिए, आयुष प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बढ़ावा देने का काम किया गया, जैसे आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इनको यहाँ पे ग्रो करने का, इस सेक्टर को ग्रो करने का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाएगा यहाँ पे इन सिंपल टर्म्स. नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस. सेबी के द्वारा भी एक आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके. नाउ ये है क्या आरपीटी पोर्टल? आरपीटी होता है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन.
ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा जो मॉनिटर करेगा, एनालाइज करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन द पार्टीज जो कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स करती है या सर्विसेज, एंड उनके खिलाफ जो भी प्राइस उनके द्वारा चार्ज किया जाता है उसके ऊपर वो उन्हें पे करना पड़ता है, राइट। ये एक पोर्टल बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे जो शेयर होल्डिंग वोटिंग पैटर्न्स है उसको भी शो किया जाएगा, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन यहाँ पे बना सकते हैं। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने फिर जो अनाउंस किया अप्रूवल ऑफ दिस न्यू आरपीटी डिस्क्लोजर बाय आईएसएफ। आईएसएफ क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉरम के हिसाब से यहाँ पे ये लाया गया है अप्रूवल। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ऑन द सुपरवाइजरी कंफर्म्स, राइट। देखो ये पहले इनके ऊपर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ना पहले रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी आरबीआई के द्वारा कि ये कोई भी नया कस्टमर्स नहीं ले सकते हैं, राइट। एंड इनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि कोई भी ये लोन को या एडवांसेस को या फिर कोई भी नहीं, अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहे उनको इससे पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। अब ये कोई भी नया लोन को वापस से लोन नहीं दे सकते हैं, कोई भी एडवांसेस नहीं लेंगे, कोई भी लोन को रिन्यू नहीं करेंगे, किसी भी अगर अप्रूवल किसी भी जगह ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले इनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसको, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को, बिकॉज ऑफ सुपरवाइजरी कंसर्न्स, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर एनपीसीआई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक नया एनपीसीआई रूल, नया यूपीआई रूल जो बेसिकली ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन के लिए रहेगा ऑफ चार्जबैक्स फ्रॉम 15th of February 2025, राइट। ये बेसिकली सबसे पहली चीज़ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है ये, इनके द्वारा यूपीआई को रिलीज किया गया था। एंड एज पर दिस न्यू रूल चार्जबैक्स विल नाउ बी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड रिटर्न रिक्वेस्ट, राइट। मतलब ज़्यादा रिटर्न रिक्वेस्ट होंगे उस पर, या फिर ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन देखी जाएगी कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर तरीके से कंफर्म हुई या नहीं हुई, राइट। उसके बेसिस पे अगर कोई पर्सन यहाँ पे कंप्लेंट डाल देता है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन कर दी लेकिन ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है या फिर गलत ट्रांजैक्शन हो गई है, तो उसके बेसिस पे अब जो इन कंपनीज हैं वो T+0 दिन के अंदर ही यहाँ पे उस अमाउंट को सेटल करने का काम कर सकती है। मतलब बैंक्स यहाँ पे कंपनीज के साथ मिलकर इस ट्रांजैक्शन को T+0 में के अंदर इसको चार्जबैक्स को सेटल करने का काम कर सकता है, राइट। इससे क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल कोई स्कैम कर रहा है, राइट, तो लोग उसके नंबर को डाल देंगे कि भाई इस पे पैसे मत लो, या फिर ये पर्सन स्कैमर है एंड इन्होंने मान लो पेमेंट कर दी, तो ये कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई मैंने इस पेमेंट पे कंप्लेंट इस नंबर पे मैंने पेमेंट करी थी बट सो एंड सो इज़ अ फ्रॉडस्टर, एंड विद इन अ फ्यू स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर हम उनको रजिस्टर अथॉरिटी को यहाँ पे कंप्लेंट डाल देंगे तो ये हमारी पेमेंट रुक जाएगी एंड वापस से ये ट्रांजैक्शन रिवर्ट बैक हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने एक्सटेंड किया वारंगीज क्या व्हाइट लेबल ऑथराइजेशन, व्हाइट लेबल एटीएम ऑथराइजेशन मार्च 2026 तक। ये वैकरंगी एक कंपनी है, राइट, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है एंड इनके पास 6036 व्हाइट लेबल एटीएम्स है। व्हाइट लेबल एटीएम्स वो एटीएम्स होते हैं जिनको ऑपरेट किया जाता है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाता है बाय नॉन बैंक एंटिटीज, राइट। और इनका जो ये व्हाइट लेबल एटीएम्स का जो ऑपरेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिमूव किया रेगुलेटरी बैरियर ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। पहले इनको बोल दिया गया था कि कोई भी नए कस्टमर्स डिजिटली नहीं ले सकते हैं, कोई भी नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो ये रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म कर दिया गया है एंड इनको अलाउ कर दिया गया है टू ऑन बोर्ड दो न्यू कस्टमर्स डिजिटली एंड नए क्रेडिट कार्ड्स को यहाँ पे ये इशू कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने अप्रूव किया जूलिया इन्वेस्टमेंट्स को कि अपना स्टेक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बढ़ाकर 7% तक कर दें। अभी जो जूलिया इन्वेस्टमेंट का स्टेक है वो बहुत कम है, वो है अराउंड 1.3% के करीब, राइट, जो बढ़कर अब कितना हो जाएगा 7% तक हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईएफसी जो कि एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का, इन्होंने इन्वेस्ट किया 860 करोड़ रुपए इन इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड इन द रोड सेक्टर। ये बेसिकली क्यूब इनविट के द्वारा इशू किया जाएगा ये लोन 800 या फिर हम बोलें ये इन्वेस्टमेंट 860 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि
इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया जाएगा। एंड यहाँ पे जो इन सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में जो आपका इंटरेस्ट रेट मिलेगा या कूपन रेट होगा वो है 7.67% का, 7.67% का। अब देखो ये इशू कौन कर रहा है, ये दे रहा है क्यूब इन्वेट। इन्वेट क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे आपके रीट होते हैं ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिमिलरली ये इन्वेट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट्स में आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो, इन्वेट्स में आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाते हो, जैसे रोड, हाईवेज, आपके टोल कलेक्शन से आपका रिटर्न बनता रहेगा, राइट। मतलब ये चैनल होता है, यहाँ पे फिक्स रिटर्न दिया जाता है क्योंकि एक सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड है जहाँ पर आपका 7.67% का कूपन रेट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक्सिम बैंक, इन्होंने $300 मिलियन का यहाँ पे क्रेडिट दिया है वियतनाम को, ताकि ये गार्ड बोट्स को एंड पेट्रोल वेसल्स को प्रोक्योर कर सकें, राइट। एक्सिम बैंक मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है वियतनाम को, ताकि वो अपने सर्वेलेंस को और बेटर कर सके। 2 डील हैं ये, $120 मिलियन की, $180 मिलियन की। $180 मिलियन है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल, और आपकी जो $120 मिलियन की ये डील रहेगी, ये है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई स्पीड गार्ड बोट्स। नेक्स्ट है दिसेंट्रो, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड सेंट्रल केवाईसी सॉल्यूशन जो अलाइन करता है CER/SCIs की न्यू कंपाइलेंस मैंडेट के साथ। सिंपल ये समझो केवाईसी होता क्या है, जब भी आप बैंक खुलवाने जाते हो, राइट, या फिर आपका एक प्रॉपर चेक होता है ना, आपका आधार कार्ड मांगा जाता है, आपकी फोटो, आपके सिग्नेचर, ये सारी चेक किए जाते हैं, तो वो आपका बताना कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आप एक फेक आइडेंटिटी आप नहीं ला रहे हो, राइट। तो आप सेंट्रल केवाईसी सॉल्यूशंस यहाँ पे लॉन्च किया गया, फर्स्ट सेल्फ होस्टेड केवाईसी सॉल्यूशन जो अलाइन करेंगे CER/SCIs के न्यू कंपाइलेंस मैंडेट से, डिसेंट्रो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं MSCI इक्विटी इंडेक्स, ये फरवरी 2025 का रिलीज किया गया, जिसमें से HIML ये इसको ऐड कर दिया गया है। HIML क्या है आपका, Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, इनकी द्वारा भी IPO भी आया था इनका कुछ टाइम पहले, राइट। तो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड को ऐड कर दिया गया है MSCI इक्विटी इंडेक्स में। वहीं पे AGEL जो कि है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, मार्क करेंगे। अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं, ये बेसिकली MSCI एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। एक होता है ऑल वर्ल्ड मार्केट इंडेक्स, राइट। इसमें याद रखेंगे ऑल कंट्री, नॉट ऑल वर्ल्ड, MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। इसमें ना 3 कंपनीज याद रखना, यूनाइटेड एयरलाइंस ऑफ USA एंड यूनाइटेड के बाद यूनाइटेड के बाद रेडिट A ऑफ USA एंड नेतेरा। ये 3 कंपनीज हैं जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट एडिशंस रहेंगी MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स में, तो इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स हुए थे, जहाँ पे PR श्रीजेश को स्पोर्ट्स स्टार मेल स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का खिताब मिला PR श्रीजेश को, एंड मनु बाकर को फीमेल स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में प्रिया श्रीजेश हॉकी से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल मनु बाकर ये आपकी शूटिंग से रिलेटेड है। एंड नेशनल टीम इंडियन मेंस एंड वीमेंस टीम चेस की टीम। यहीं पे अगर मैं खो खो वर्ल्ड कप की बात करूँ, पहला एडिशन हुआ था खो खो वर्ल्ड कप का इंडिया में, इंडिया ने होस्ट किया था। एंड यहाँ पे वीमेंस टीम में कौन जीता, इंडिया की टीम जीती। मेंस कैटेगरी में भी इंडिया की खो खो टीम यहाँ पे विजेता रही। नेक्स्ट आ जाते हैं NTPC लिमिटेड, इनको कन्फर किया गया फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबल अवार्ड से फॉर वाटर रेजिलियंस। मतलब ये वाटर कंजर्वेशन पर, सस्टेनेबिलिटी पर, राइट, प्रॉपर मैनेजमेंट पर वाटर के एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन द वाटर सेक्टर ये प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए इनको फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। प्रेसिडेंट्स रूल अभी इम्पोज किया गया है मणिपुर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मार्क करके चलेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल क्यों लगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह इन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया है, राइट। एंड एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो ये रूल लगा है ना, ये बेसिकली क्यों लगाया जाता है, जब कोई स्टेट जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, वहाँ पे उनकी सरकार गिर जाती है, ऐसे केसेस में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अगर मैं प्रेसिडेंट रूल से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंडर आता है, 356 आर्टिकल के अंडर आता है। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर गवर्नर जो होते हैं, बेसिकली याद रखेंगे, गवर्नर जब ये ऐसे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना, तो जो पूरी स्टेट को संभाल रहे होते हैं वो गवर्नर स्टार्टर होते हैं, जो कि मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट टीम के ही। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। ONGPL ये कि एक जॉइंट वेंचर है, 50-50 जॉइंट वेंचर है ONGC एंड
एनटीपीसी के बीच में, एंड ये पहली इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे 100% स्टेक ये एक्वायर करेंगे बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड अयाना रिन्यूएबल पावर लिमिटेड में 19,500 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। एशियन विंटर गेम्स हुआ था, इसका 9th एडिशन अभी हमें देखने को मिला था, चाइना में देखने को मिला था, एंड चाइना ने यहाँ पे मेडल टैली में डोमिनेट किया है। इन्होंने 85 मेडल्स यहाँ पर सिक्योर करे। टेक अ नोट ऑफ दिस, 7 से लेकर 14 फरवरी तक ये इवेंट हमें देखने को मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 गोल्ड थे चाइना के, एंड ये मेडल टैली रहेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है रिनॉन्ड क्लासिकल सिंगर पंडित प्रभाकर कारेकर। इनका रिसेंटली निधन हो गया 80 साल की एज में, मुंबई महाराष्ट्र में। ये अपनी सोलफुल सिंगिंग, डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए काफ़ी फेमस थे, एंड बिसाइड बीइंग अ रिमार्केबल परफॉर्मर ही वाज आल्सो डेडिकेटेड टीचर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज पर इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे स्टूडेंट्स 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। बच्चों में कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट, क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, राइट, कैसे उनको फाइट करना है, कैसे मेंटली स्ट्रांग रहना है, कैसे उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 से लेकर 2026 तक इसका एक कैंपेन चल रहा है, एंड इसी की एक थीम याद रखेंगे, इंस्पायरिंग एक्शन। इंस्पायरिंग एक्शन ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड पेंगोलियन डे, 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक काफ़ी रेयर मैमल आप देख सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए, राइट, इसकी स्पीशीज़ को सेव करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। एंड इस बार 14th एडिशन हमने इस डे का ऑब्जर्व किया। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर, देन विल मूव टू द होमवर्क सेक्शन। नेक्स्ट इज कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट इन पार्टनरशिप विद MEITY इन्होंने एग्री हब को लॉन्च किया, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो कि एग्रीटेक सेक्टर में बूस्ट लाएगा। तो किस IIT ने पार्टनर किया? यह है IIT इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द यूनिवर्सिटी दैट अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट टू प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर फ्रॉम टाटा ग्रुप नोएल नेवल टाटा फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप। राइट, मतलब इन्होंने बिजनेसेस को ग्रो करने में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है उनको, उसके लिए इनको नोएल टाटा को यहाँ पे सम्मानित किया गया। किस यूनिवर्सिटी से? यूके की ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द डिफेंस सिस्टम दैट DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट ट्रायल्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा इन Feb 2025। तो कौन सा है? वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। फिर आ जाते हैं, द इंडियन नेवी लॉन्च्ड इट्स 9th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार्ज दैट लैंडिंग शिप एम्यूनेशन 23 एट सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन थाने महाराष्ट्र। ये जो ACTCM बार्ज है, इसको डिजाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है किसके द्वारा? MSME शिपयार्ड के द्वारा, विद एन इंडियन शिप डिजाइनिंग फर्म एंड इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नेविगेशन सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया गया JAXA के द्वारा यूजिंग H3 रॉकेट फ्रॉम इन जापान। ये H3 रॉकेट भी जापान का है, JAXA के द्वारा ही सैटेलाइट लॉन्च की गई, मिचिबिकी, जिसका नाम है मिचिबिकी 6, नॉट 5, मिचिबिकी 6। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 92nd USA स्पेस वॉक, किस एस्ट्रोनॉट ने भी एक रिकॉर्ड सेट किया ऑफ टोटल स्पेस वॉक टाइम बाय वीमेन? ये है सुनीता विलियम्स। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है 62 hours 6 minutes इन स्पेस का। ये एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है नासा की। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी जीता 2nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर 2nd कॉन्जिक्यूटिव टाइम बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन मलेशिया। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे जीता गया 2nd एडिशन ऑफ ICC वीमेंस अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली जीता 87 टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 को बाय डिफीटिंग डी गुकेश इन द फाइनल, जो कि इवेंट नीदरलैंड में हुआ था। तो आर प्रगनंदा ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, फॉर्मर जर्मन प्रेसिडेंट एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF डैश पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। तो वो है हॉर्स्ट कॉलर, राइट। इन्होंने यहाँ पे, इनको अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ये फॉर्मर जर्मन प्रेसिडेंट रह चुके हैं सन 2004 से लेके 2010 तक। ये 9वें प्रेसिडेंट थे, एंड इन्होंने सर्व किया है IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे सन 2000 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वर द 2 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी हु सेल्ड इंडियन नेवी सेलिंग वेसल तारिनी इनटू द वर्ल्ड्स मोस्ट रिमोट लोकेशन पॉइंट नीमो तक, राइट। एंड ये पार्ट था नविका सागर परिक्रमा 2 इन जनवरी 2025 में। कौन 2 थे वो है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड रूपा ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रिसेंटली ब्रेक थ्रू इन लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो अचीव किया गया DRDO के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा एट IIT हैदराबाद। कौन सा है? वो है रॉकेट कंपोनेंट्स के यहाँ पे ब्रेक थ्रू के लिए। ब्रेक थ्रू होता है जब एक बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमें देखने को मिलती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन्होंने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस स्टेट में। तो ये ब्रीडिंग सेंटर व्हाइट टाइगर का कहां पे आने वाला है, ये रहेगा आपका मध्य प्रदेश में। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र सेटअप करेगा इंडिया का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट। एक ये यूनिवर्सिटी सेटअप होगी जहां पे प्रॉपर इसके कोर्सेज होंगे, डिप्लोमाज होंगे, ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे, ताकि स्किल एंड इनोवेशन पे फोकस किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सी पोजीशन रही इंडिया की इन द टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में, जो फॉर्ब्स के द्वारा रिलीज की गई थी। तो इंडिया 12वें पोजीशन पे आ जाता है, यूएसए फर्स्ट पर, सेकंड पे आ जाता है चाइना एंड थर्ड पर आ जाता है रशिया, ठीक है। एंड इंडिया की जीडीपी है $4.27 ट्रिलियन, वर्ल्ड में ये 5th पोजीशन पे आती है हमारी कंट्री। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको लॉन्च किया गया ऑन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एट जिफ्ट सिटी बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। वो कौन सा है, वो है सेंसेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन वीमेन टू विन द 40th एडिशन ऑफ मिस वीमेंस टाइटल एट द इवेंट, जो कि यूएसए में हुआ। वो है शिगो गैले, राइट। इसका इवेंट लास वेगस में हुआ था। यह है 40th एडिशन ऑफ मिसेस वर्ल्ड टाइटल 2025 का। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लेमिश नेशनलिस्ट बार्ट एल्बर्टा लिएंडे वेबर, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर कहां का, तो ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गई हैं बेल्जियम का, राइट। ये सक्सीड करेंगे अलेक्जेंडर दे क्रू को। नेक्स्ट, हु वन द सिल्वर मेडल इन द मेन 60 मीटर हर्डल्स इन द यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप एट द मीटिंग मिरामास, जो कि फ्रांस में थी, इन फेब, सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फिनिशिंग 7.64 सेकंड में। तो वो है तेजस शिरसे, ये इंडिया के प्लेयर हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेन 60 मीटर हर्डल्स में, और इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने सेटअप किया 7.64 सेकंड का। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा फुल फ्लैश ट्रीटी घोषित किया गया, बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट या फिर इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है एंड अ लीगल एंटिटी 23 जनवरी से। ये है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये बेसिकली जो बिग कैट्स हो जाती हैं, जैसे आपकी प्यूमा, जैगुआर, टाइगर, लायन, लेपर्ड, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया UNGC को टू एडवांस कमिटमेंट इन बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल एविएशन। सस्टेनेबल एविएशन पे फोकस करने के लिए GMR एयरपोर्ट्स अभी रिसेंटली इन्होंने UNGC को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द 13 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 13 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, जिसका 2 फरवरी से 15 फरवरी तक हुई मालदीव में। तो कौन सी है वो 13th एडिशन एक्सरसाइज इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं उस ग्लोबल इनिशिएटिव का नाम बताओ दैट इंडियन ओवरसीज बैंक ज्वाइन टू शोकेस इट्स डेडिकेशन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंजेस एंड प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग। तो उस ग्लोबल इनिशिएटिव का क्या नाम रहेगा, राइट। वो है आपका ग्लोबल इनिशिएटिव का क्या नाम रहेगा उधर, वो है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। इसके अंडर बेसिकली क्या होगा, अब जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, जब वो अपने फाइनेंसिंग देगा या लोन्स प्रोवाइड कराएगा या इन्वेस्टमेंट करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चेक करेगा कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कितना फॉलो कर रही है वो कंपनी, एंड वो अपने प्रोडक्शन में कितना कार्बन रिलीज करती है इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर विच एल्बम इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड वोकलिस्ट चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, इन्होंने अर्न किया हर फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड्स अंडर बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी एट द 67th ग्रैमी अवार्ड्स फरवरी 2025 में। तो वो एल्बम कौन सी थी, त्रिवेणी। नेक्स्ट आ जाते हैं द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फीस सॉफ्टवेयर, इसको लॉन्च किया गया बाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 8वें नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीट के दौरान एट IIT हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइंड आउट द इंडियन प्लेयर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड इन्होंने अपनी फाइनल अपीयरेंस दी रणजी ट्रॉफी में फॉर वेस्ट बंगाल अगेंस्ट पंजाब। यह है वृद्धमान शाह। नेक्स्ट आ जाते हैं किस माउंटेन में इन न्यूजीलैंड इसको रिवर्ड किया गया एज एन एंसेस्टर बाय माउरी, ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड, राइट। लीगल पर्सनहुड उस माउंटेन को बोला गया। माउंटेन का नाम रहेगा क्या, माउंटेन आपका तारंकी मोंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन, कौन है वो है हिरोकी तोतोकी। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन कार्बन मार्केट सपोर्ट्स डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। वो है IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये इंडिया क्लाइमेट वीक जो 3 से लेकर 7 फरवरी तक हुआ था न्यू दिल्ली में, उसके दौरान इसको साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर विच मिनिस्ट्री नेशन वाइड कैंपेन वाटरशेड यात्रा को लॉन्च किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री, जो पहली कंट्री बनी
फर्स्ट लैटिन फॉर विच आइडेंटिफाई द कंट्री दैट बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन जिन्होंने विड्रॉ किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, इसी को सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है। एंड पनामा ने यहाँ से एग्जिट कर दिया था। इंडिया भी इसको अलाउ नहीं करता है एंड ब्राजील भी इसको फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अभी कितने अवार्ड जीते इन द कम्युनिकेशन एक्सीलेंस। दूसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किन्होंने सम्मानित किया, कितने बच्चों को। तीसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन द एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एंड स्टेट, जिस स्टेट से वो बिलोंग करती है। फोर्थ क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इंडिया के कितने मेडल आए एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, नंबर ऑफ मेडल्स, इंडिया की मेडल टैली में क्या रैंक थी, कितने गोल्ड थे एंड लोकेशन बतानी है कहाँ पर ये हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों ये है हमारे होमवर्क क्वेश्चन, ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा सभी बच्चे। मैं होमवर्क ज़रूर देखता हूँ कि कितने बच्चे और कौन कौन कमेंट कर रहा है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।